अब नए मोड़ पे खड़ा है देश, बदल रहा परिवेश वेश। सतरंगी कुछ धागे लेकर चलो चलो अब दुनिया जोड़े। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। अपनेपन के ताने बाने पर देखो क्या क्या हम बनाते, हुनर के नए रंग दिखाते, नए जमाने से कदम मिलाते। पश्मीना को ओढ़ के कश्मीर तक हम हो आते, नरम नरम कांजीवरम रेशम का एहसास हम पाते। कहीं कपास कहीं जूट तो कहीं मलमल कहीं सूत तो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको साथ ले आते, सबको हमने साथ बढ़ाते। कभी विदेशी घाट पर कभी शहरों में हाट पर, उसकी पूरी कीमत दिलवाते, जो मिलजुल कर हम बनाते। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। अपने बन के ताने बाने पर देखो क्या क्या हम बनाते, रंग बिरंगी सूती रेशम तरक्की के धागे से हम लाते हैं, जिनको चुनकर। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। हैंडलूम अपनाएं, बुनकर को सहयोग पहुंचाएं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। India, the land of heritage and culture. In the last decade, this country has grown enormously and has made an impact all over the world. Whether it is related to culture, tradition, creativity or fashion, everyone seeks inspiration from here. This amazing land of inspiration has given rise to India Handloom, an initiative of the Ministry of Textiles, Government of India. It is a rich and colorful story of Indian heritage and artisans. With India Handloom, we have revived age-old and traditional techniques of handloom and fused them with the latest fashion trends. Right from the cool, casual and the funky to the runway-ready and haute couture, you will find it all at India Handloom. Thousands of skilled artisans from different clusters across the country have converged at India Handloom to innovate new trends in fashion. And this is what makes every design unique. Supervised under a strict registration policy, every Indian handloom product is made from natural fibers. They are genuine and 100% defect-free. Inspired by nature, the color palette of India Handloom is a vibrant mix of fresh and bright hues. To bring out the best of every shade and fabric, different weaving techniques are practiced. Tapestry, the most complicated, labor-intensive and highly skilled weaving technique. It is practiced for weaving Kullu and Kinori shawl, Pashmina shawl, Paithani sari and designer daris. The reason why this intricate work calls for only skilled craftsmanship is because a single weft consists of over 250 tiny and colorful threads. Brocade, the most versatile hand weaving technique. It is used on fabric with extra warp and weft or with intricate weave.
The intrinsic beauty of brocade is best appreciated on fabrics like Jamdani, Tanchoi, Bootidar, Jangla, and so on. Of all the handloom designs, Ikat is the most complicated, time-consuming, and very special too. Before weaving, predetermined patterns are transformed onto yarns in different colors by tying and dyeing the exposed area repeatedly with great precision. The design consists of geometric motifs and floral patterns. This warp and weft technique calls only for skilled craftsmanship, like that of the Ikat handloom clusters from India. Fresh colors, dramatic patterns, and an age-old craft of tying and dyeing makes every Ikat design a collectible. So get ready to make waves with India Handloom. It is bright, bold, and beautiful. Hand-woven exclusively for you. Take home a gift of India. Take home India Handloom. In India, traditional crafts and weaving on handlooms have a long and glorious history because of their inherent value, perfection of designs, motifs, eminence, and distinctive style. Skilled artisans and weavers in various regions of India have been demonstrating unique skill sets passed on as legacy over the generations. Whether it is Banarsi brocade, Bhagalpur silk, Thanjavur painting, or Madhubani painting, India indeed is a fascinating reservoir of many such exquisite products. This rich cultural heritage of India has attracted consumers not only from all over the country, but from all over the globe. This provides an immense potential for our boosting exports, as well as the economic prosperity of our artisans and weavers. However, the unique quality and aesthetics of these products that rightfully belong to their specific regions often attract dishonest business practices, and most of these products experience infringement. So the question that often comes to mind is, what has our government done to provide legal protection to these products from infringement and duplication? Hello, have you heard of the term GI? Well, it stands for Geographical Indications. In fact, in compliance with International Legal Framework of Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIP's agreement, the Government of India has enacted Geographical Indications of Goods Act 1999. The good news is, till April 2017, a larger majority of 149 handloom and handicraft products have already been registered under the GI Act, thus adding up to a total of 270 products of all categories registered. Now, the important question is how to obtain registration under the GI Act. Well, any association of persons or producers organization can apply for the registration.
Once the registration is granted to a product under GI Act, any individual producer, artisan of that geographical area can register oneself as an authorized user of that particular GI product. Let me now tell you the benefits of registration under GI Act. Registration prevents unauthorized use of registered GI name and provides legal protection to the registered proprietors and all the authorized users of GI products. The GI Act provides punishment for infringement or duplication. Therefore, GI registered stakeholders can capitalize on the premium price associated with these premium products in the national and international markets. It also provides complete quality assurance to the customers about the genuineness of the product. Today, a lot is being really done by the government to help handloom weavers and handicrafts artisans for obtaining GI registration. The Ministry of Textiles provides financial assistance for bearing the expenses of registration under GI Act. Its various agencies such as Textile Committee, NIFT, field offices of DC Handlooms and DC Handicrafts have been proactively working for getting prominent products registered under GI Act. The ministry has conducted a large number of awareness workshops and is also assisting registration holders in enforcement of their rights. The Honorable Prime Minister of India launched the India Handloom brand on the first National Handloom Day on 7th of August 2015 to promote exquisite, genuine handloom products. The brand has already covered 41 handloom products registered under GI, which are being proactively promoted by the Ministry of Textiles. The ministry also organizes special exhibitions for GI registered products and undertakes special marketing campaigns. Artisans and weavers with GI products are given preferences in all exhibitions. So, where should one go to avail these benefits? Well, for any help in terms of registration or marketing under GI framework, handloom weavers can easily contact their nearest Weavers Service Centre. Similarly, the artisans too can contact their nearest Handicrafts Marketing and Service Extension Centre. GI, protecting heritage of India. तसर का बेहतर उत्पादन, सुखी हुआ बुनकरों का जीवन। रेशम उत्पादन का कार्य हमेशा से ही देश के आदिवासी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, पर आज के युग की समस्याओं ने इस विरासत को खतरे में डाल दिया है। उपज नहीं हो रहा है, खाना पीना भी कम है, पैसा से भी कम है, और बच्चा बुतरू पढ़ने कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ रेशम विकास योजना को जोड़ा है। इस योजना के अलावा महिला किसान सशक्तिकरण योजना भी नई कृषि तकनीक और बेहतर आजीविका की नींव रखती आ रही है। ये पहल है उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों को समय पर उपलब्ध कराने की, जिससे तसर रेशम का उत्पाद बढ़ सके। पंचायत स्तर पर शुरू हुई इस योजना में सबसे पहले महिला सदस्यों का चयन किया गया और उनसे पैदावार बढ़ाने और बाजार में मांग के अनुसार काम करने पर बातचीत की गई। चुनी हुई महिलाओं ने जिन कार्यों की जिम्मेदारी ली वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, उत्पादकों द्वारा हर उत्पादक समूह के बैंक खाते खोले जाएं। दूसरा, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा परिसंपत्ति निर्माण के लिए पूरा फंड जारी किया जाए उत्पादक समूह के अकाउंट में। और तीसरा, लेन देन के रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उत्पादक समूह को पासबुक जारी की जाए। नतीजे काफी उत्साहवर्धक निकल रहे हैं। जहां परंपरागत तरीके का इस्तेमाल कर ये गरीब भूमिहीन किसान करीब 8,000 रुपए ही अर्जित कर पाते थे, वहीं इस पहल से जुड़कर वो तकरीबन 20 से 25,000 रुपए तक कमा रहे हैं। और ये सब संभव हुआ है प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर
तसर विकास समिति के निर्माण के बाद, जिसने रोग मुक्त बिछी हुई जमीन की गुणवत्ता और कीमत का विनियमन किया, कच्चे रेशम के कोवा का संरक्षण और बुनियादी बीज उत्पादन को गति दी और कच्चे रेशम के कोवा को बेचने हेतु दूर दराज के बाजार का आंकलन किया। अब तसर क्षेत्र में बसी महिला किसान बिना किसी परेशानी के रेशम उत्पादन के कार्य में तालीन हो सकेंगी और साथ ही आय में वृद्धि पाकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगी।